ओके पिला माने ए वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके सेति पई हमें दीटा मास नबा ये गोटे मास जार मास अछि m1 आउ गोटे मास जार मास अछि m2 both are separated by a distance केते ना small r। So what will be the gravitational potential energy for this system? Okay, that we have to find out। आमे जानिचे gravitational potential energy माने attraction force between the two masses। Suppose we are going to consider this is your earth and another mass, both are attracting with each other, both are attracting, that means here gravitational potential, gravitational force is attractive। Okay, attractive। Now here you can see two masses are separated by a distance r। Okay, now consider another situation, another position of this m2 रो आउ गोटे पोजीशन कंसीडर करा जाऊ एठी m2 एई पोजीशन पाए सपोज डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 इज योर x। ओके तो जेहेतु एंड एठू एई x रु मु गोटे स्मॉल डिस्टेंस आको डिस्प्लेसमेंट करूछ, स्मॉल डिस्टेंस से डिस्टेंस ढाला केते ना dx। ओके स्मॉल डिस्टेंस क्वाड को डिस्प्लेस करछि याड away from the m1, away from the m1। देखो जत्ते बळे एठी ग्रेविटेशनल फोर्स होची अट्रैक्शन बिटवीन टू masses। सो हियर जत्ते हम m2 टाकू किछि डिस्टेंस याड को नबा क्वाड को राइट को नबा तमने आमु किछि काम करिया पड़ियो, वी हैव टू डू सम वर्क। आमु किछि काम करिया पड़ियो काहे कि ना this m1 is attracting m2 towards this side, but we are moving this side, that means we are moving opposite to the force between m1 and m2। so जदि dx distance जे ट्रैवल करे by force, by applying force f, ताल केते एनर्जी बा केते वर्क डन मु करबी dw इक्वल टू f डॉट dx। एटी f एंड dx बोथ आर ऑपोजिट। सी अट्रैक्शन फोर्स कोड अछि याडे अछि, डिस्प्लेसमेंट कोड हला याडे हला ए डायरेक्शन रे, ए डायरेक्शन रे डिस्प्लेसमेंट हला बट अट्रैक्शन फोर्स अछि कोड याडे, राइट। तो ए दि जण भीतर एंगल केते ना 180। सो dw इक्वल केते हबो ना f dx cos 180 डिग्री, कारण f force, attracting force is towards this side and this is your displacement direction। so dw हमें पाइबा f dx cos 180, that means dw हमें पाइबा minus f dx। एटी f टा केते हबो, f टा हम जानि छे by gravitational force between the two masses, this will be how much, g m1 m2 by केते डिस्टेंस अछि x स्क्वायर। सो एठी dw तुमर हे जिवो माइनस g m1 m2 by x स्क्वायर dx। ओके ओके नाउ तुम इमेजिन करो एठी dx डिस्प्लेसमेंट मु करूनी, एठू केते डिस्टेंस रो अछि बा दि जण भीतर डिस्टेंस केते अछि x, एठी अछि m2 मास टा, एठू x डिस्टेंस रो मु ताको पूरा इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं जाउछि, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं जाउछि, ताले केते वर्क डन करबी। एठी देखो एठी dx डिस्प्लेसमेंट पाई मते एति वर्क डन करिया पड़ुछि, ताले आउ टिके बढ़ेबी जदी
आउट के बढ़ेबी जदि डिस्टेंस तामाने मते अधिका रु अधिका काम करिया पड़ो कहीं ना अट्रैक्शन फोर्सटा कुआडे अछि याडू को अछि डिस्प्लेसमेंट कुआडे हबो याडे हबो तामाने अधिका रु अधिका काम करिया पड़ो जे पर्यंत इनफाइनाइट डिस्टेंस को न जाई बा ग्रेविटेशनल फील्ड बाहर को न जाईची ताले एटी कंटीन्यूअसली मु ताको डिस्प्लेस कर जाउची कंटीन्यूअसली डिस्प्लेसमेंट जतोल होउची सेतबेले एडिशन देख एठू dx डिस्प्लेसमेंट कली केते हैला dw अगेन अनदर dx जदि मु करबी पुणी आउ थरे ऐड करा हबो पुणी आउ dw ओके अगेन अनदर dx जदि डिस्प्लेसमेंट करबी ताले पुणी आउ गोटे dw एमते ऐड हेई को जाई जो इनफाइनाइट आज we are moving continuously the body towards this side up to infinite ताले कौन हबो तो होगा क्या instead of addition of each and every time addition ना करके we can do the integration so total work done equal to कितना होगा integration from where it is initially x में था x to infinite minus g m1 m2 by x square dx got it so यहाँ पे तुमको जितना काम करना पड़ेगा m2 को x डिस्टेंस से लेके इन्फानाइट तक जाने के लिए उतना ही एनर्जी और उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा बट हमको चाहिए क्या कितना अप टू r तो हियर कितना होगा हियर इंटीग्रेशन शुड बी फ्रॉम r टू इंफिनिटी किसी लिए के हमको r डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए सो ये इंटीग्रेशन होगा r टू इनफाइनाइट सो w total work done to take the body from this r distance to infinite will be how much here g m1 m2 कांस्टेंट ये है इंटीग्रेशन के बाहर चला गया r इनफाइनाइट 1 बाई एक्स स्क्वायर dx तो ये कितना होगा g m1 m2 1 बाई एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट हाउ मच माइनस 1 बाई x r to infinite right so here you just put the limits g m1 m2 here put the limit first infinite minus 1 by infinite minus of minus 1 by r okay here this value is 0 here minus plus so we can get minus g m1 m2 by r this is the potential energy we found when two body will be separated by a distance r this much potential energy gravitational potential energy will be store habo यदि two masses m1 m2 कितने डिस्टेंस थिबे रहेंगे कितना डिस्टेंस में रहेंगे r डिस्टेंस में रहेंगे तब उस सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इतना है माइनस जी m1 m2 बाई r यहाँ पे हमने क्या किया हियर वी डॉन दैट दिस m2 we consider at a arbitrary position at x and we taken this m2 को यहाँ से लेके हम इनफाइनाइट तक गए एंड इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक किए r to infinite because we want to find out the potential energy when these two bodies are to be separated by a distance r तो हमको कितना मिला minus g m1 m2 by r so here one interesting fact you just observe over here if r tends to infinite that means w tends to 0 because something by infinite is equal to 0 that means here you can see आज जितना जितना r तुम बढ़ाते जाओगे w का वैल्यू हियर यू कैन सी ये r किधर है डिनोमिनेटर में है w का वैल्यू उतना डिक्रीज करता हुआ जाएगा डिक्रीज एंड नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज दैट मीन्स
सपोज पहले ये 5 था, उसके बाद होगा -3, उसके बाद होगा -2। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव वैल्यू डिक्रीजेस मीन्स दिस एनर्जी, potential energy increases. So at infinite, if I'm going to consider r equal to infinite over here, then we can found potential energy, gravitational potential energy between two system will be equal to how much? Will be equal to, here will be equal to 0, w equal to 0. This will be the maximum potential energy stored in between two masses separated by a distance infinite. ओके, देन जितना हम उसको क्लोज लेते आएंगे, क्लोज लेते आएंगे, क्लोज लेते आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वो घटता जाएगा, घटता जाएगा। एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस आर वी कैन फाउंड पोटेंशियल एनर्जी इज योर माइनस here minus g m1 m2 by r. Okay, so thank you so much for watching this video.